come from a culture where you just cannot exist without the sounds of qawwali going into your subconscious, particularly if you are into some kind of a divine connection, like particularly if you go to a dargah, to a khanqa. Qawwali is Qawwali means sama, divine music, and it is said that it was started by Hazrat Nizamuddin Auliya. Its call is Man Kuntu Mawla, Fahaza Ali Mawla, and that's how the recitation of the call in a certain kind of a way, and the kind of musical composition that you hear in the Qawwali, which is what it begins with, is Qawwali, and that's how it starts with Sama. And Sama means really cleaning your soul, cleaning your heart, cleaning your mind of the world, and letting music take over. I think what happens that unless music of this kind enters your soul, you don't see human being as one. And to see human beings as one, and this, you see the beauty of the poverty, you see you see the dignity of the common man, and that is what music does to you. You see so much, what should I say, radiance in the common folk. You don't need to see a sophisticated person reacting to that kind of sound. That sound is taking its own path. And that is what I think Khwaja Muhyiddin Chishti did. He broke the barriers of music. It was not just limited to the upper echelons of society. It was like a dam that burst and reached and flooded the whole human scape. So I think that is what you get, that feeling when you hear Qawwali. You get a feeling that it's opening up an avalanche of feelings. That's one way of looking at it. Then the other way is that what happens to you when you listen to Qawwali. And I think when you listen to Qawwali, you see the whole journey sound takes. I mean, this film that you saw is really a blending of sound. It's a subconscious blending of sound. It's nothing designed, it's nothing on paper, but it's really your soul, your heart, which is taking sound in and taking sound out. So really, when somebody sings with me, for me, I take that sur and put it back in their larynx. So it's a question of taking and giving back. That has to be a continuous process in Qawwali, and that is what Qawwali is. Unless you are in a mehfil where people are not receiving back, then there's no Qawwali. It's not a one-way traffic. It's a cycle which is going on between you, the listener. I mean, you are the listener, the saint is in his presence, and the singer. So the singer is getting purified, you're getting purified, and there's a certain kind of energy which is flowing through you. And you have to be aware of that, and that is what really creates miracles of sorts. So, I mean, you can talk about this till the cows come home, but this is a journey. When you take this journey, you feel ignorant. You feel you don't know anything. And that is the beauty of the journey, is the fact that you don't know the way. If you know the way, then you're Mr. Know-it-all. Then you don't find anything, because you know the way. But if you don't know the way, every moment you're finding something. You're finding beauty, discovering little moments in people's eyes, in their voices. Everybody's giving you something all the time. And that is what Qawwali does. It's a kind of a distilled sound which comes, seeps into you, and goes back to you. So it's really a cycle of sound, and you have to really surrender yourself to listen to that kind of music. If you don't surrender, you will not get anything. So there are two ways of listening to it. Either sit
right in front and pray for the qawwal or the singer, or sit right at the end and pray for the listener, the last man in the audience. There's no other way of listening to a qawwal. That's so beautifully said. You know, because of COVID, I don't want to do the mic to and fro. I think you keep it. I'll do it like this. No, please, you keep it. I have just, one line questions, so I would just speak like this. But again, I would just say your first memory of Qawwali, do you have it as whether it's Lucknow or you're from Kutwara, whether it's Kutwara? I think, yeah, these are the places where I heard the sound, and these are the places which are what I'm made up of. So, definitely, दिल्ली तो हम बाद ही में आए, अजमेर शरीफ भी बाद में गए, लेकिन तैयार होके गए, पक्के गए. So while we are talking, if there is any, because you all have experienced partly, the intimate sessions that we did with Qawwali, where there was a single Qawwal sitting, minus any amplification, and you formed a connect with the jisko ki nisbat kehte hain. Partly because you all came back and said, oh, we've never heard Qawwali like this. So based on that, if you feel or you want to share something, you please, in between the conversation, we can have questions if you feel anything like that. Please, I would say like children, just raise your hand so that we know. Yes? Yes? ऊपर दर्जे के लोगों के नहीं है, दिल में आनी चाहिए बात. आप समझते हैं कि इस वक्त एक दौर एक ऐसा आ गया कि we are not able to cross this class chasm where people are unable to experience this kind of thing, because more and more I sometimes go मैं इस मज़हब की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं क्लास की. Is that something that you imagine during Nizamuddin's time was there, or is it something you're observing now? देखिए, हर दौर में तज़ाद रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रहा है. कोई दौर ऐसा नहीं है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हुआ करे. अब हज़रत निज़ामुद्दीन के दौर में भी देखिए ना, वो ही नेवर मेट द रूलर. जब वो रूलर आते थे तो पीछे से निकल जाते थे. तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? अभी आजकल तो हम लोग जब कहीं न कहीं बच के सामना भी कर लेते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं होती. लेकिन इतना यकीन है कि आदमी के दिल के अंदर जो गुदाजी है, जो सॉफ्टनेस है, वो हमेशा कायम रहेगी. वो आप कोई भी हाकिम आए, उस सॉफ्टनेस को हम ख़त्म नहीं कर सकते. क्योंकि अगर वो सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाएगी तो आपको खुद तकलीफ होगी. It's part of your physiology, part of your psychology, that softness remains. And forget the superstructure, forget the governments, forget politics, forget religious differences. The need and the urge and the relevance of that softness is, I think, perennial. वो जितना भी आप उसको दबाएंगे उतने ही वो कस के वापस रिवाइव करेगी, दैट अर्ज फॉर सॉफ्टनेस. ये मेरा ख्याल है. क्योंकि अगर मैं इस यकीन का ना हूँ तो मैं तो बहुत डिप्रेस हो सकता हूँ, और कोई भी डिप्रेस हो सकता है. लेकिन आप जब आपको यकीन है कि आपके अंदर एक मोहब्बत है, गुदाजी है, आप के आंसू निकल सकते हैं छोटी छोटी बातों पे, तो आप जो है आप में इतनी ताकत आती है इन चीज़ों को मतलब कॉन्फ्रंट करने में. थोड़ा दूसरा सवाल था, अपनी क्रिएटिव प्रोसेस को डिस्क्राइब करेंगे कि आप जैसे अभी गुराजी की बात की, वहीं से निकलता है आपका क्रिएटिव प्रोसेस, या आप पहले फ्रेमवर्क बनाते हैं अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स का? सी क्रिएटिव प्रोसेस में तो एक अकल और दिल की जंग चलती रहती है कि दिल कहता है ये करो, अकल कहती है ये करो, और फाइनली जब दिल जीतता है, जैसे रूमी के साथ हुआ,
उनकी अक्ल कुछ कही तो उनके बाप ने उनको एक अक्ल की दुनिया का माहिर और आलिम बनाया, लेकिन शम्स ने उनको एक दिल की दुनिया का दरवाज़ा खोल के दिखाया। तो तख्लीक जो है, जो क्रिएटिविटी है, एक्चुअली वो दिल की दुनिया से ही आती है। अक्ल की दुनिया में फिर वो जब फंसता है तो आर्टिस्ट होने के बावजूद ही इज़ इनटू कॉन्फ्लिक्ट, ही इज़ इनटू कंपटीशन, ही इज़ इनटू बिटरनेस। मैं तो आर्ट की पॉलिटिक्स से सबसे ख़राब थी। तो जितना आप तसव्वुफ की तरफ जाएंगे उतना आप उस तरह की पॉलिटिक्स से दूर हो जाएंगे। मतलब होना चाहिए, आजकल तो हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन उस दिल की दुनिया में कैसे पहुंच के आदमी क्रिएटिविटी को वो करता है, ये एक कुदरत की देन है। इसमें आपकी इबादत, आपका आपका फोकस, आपका रास्ता, आपका सब कुछ काम आता है। और इसमें जो जिसे कहते हैं फ़नून लतीफ़ा, फाइन आर्ट्स में हर चीज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से जुड़ी है। एक शब्द एक सुर से, और एक सुर एक साज से, एक साज एक आवाज़ से, एक उसका एक पूरा एक वो है, और उसी को आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। तो जब आप चीज़ को देख सकते हैं और दिखा सकते हैं तो फोटोग्राफ हो जाती है या पेंटिंग हो जाती है। देख, और आप जब सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, तो वो फिर एक मौसीकी का एक आलम हो जाता है। अब मौसीकी के आलम में तो मतलब एक स्काई से लिमिट, आप सोच नहीं सकते मौसीकी कहाँ कहाँ से आई है, कहाँ कहाँ जा सकती है। वो ये चीज़ जो है ये आपको फ़कीरों से मिलती है। अगर आप किसी फ़कीर से जुड़े, वो बस्ती उजड़ जाए जहाँ होए न दरवेश, आबाद है हर शहर फ़कीरों की नज़र से। तो फ़कीरों की नज़र से ही चीज़ें आबाद होती हैं, उनमें हुस्न आता है, लोगों के दिल तक वो चीज़ें पहुँचती हैं। वरना तो हम बाज़ार में घुमा करते हैं, अपने इंटरनेट पे घुमा करते हैं, हमें कुछ मिलता नहीं है। तो वो उस चीज़ को पाने के लिए एक अलग तरह की, जिसे कहना चाहिए, दुआ चाहिए होती है। वो दुआ आसानी से आदमी को मिलती भी नहीं है। अब मंजरी है, इनको वो दुआ मिली है, तो जो दुआ मिली है तो आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। अब ये जब इस फिल्म में काम किया था, दिस वाज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट टू डू समथिंग ऑफ दिस काइंड। वी डिड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड तजल्ली। तजल्ली से लेके मैंने इसको ये रास्ता बना के, अब इसमें आप देखेंगे कि एक शख्स है, वो किस तरीके से प्योरीफाई हो रहा है, और वो प्योरीफाई होके उसका रास्ता कहाँ से कहाँ निकल के कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। फिर वो उसका अपना रास्ता हो जाता है, और फिर वो रास्ते रोशन करने लगता है। Like what Muzaffar said very beautifully is दिल्ली की अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत बार बताया जाता है दिल्ली इतनी बार उजड़ी और इतनी बार बसी। बट अगर उसको, जो बात मुजफ्फर साहब ने कही, उस नज़र से देखा जाए तो दिल्ली ही एक ऐसा शहर है या बस्ती है या जो भी कहा जाए उसको टर्मिनोलॉजी में, जो 22 ख्वाजाओं की जगह है। और कहते हैं जब तक यहाँ पर ये 22 ख्वाजा हैं दिल्ली को कोई उजाड़ नहीं सकता। पर हम उसको पॉलिटिकली चाहे जितनी बार समझ लें, पर कुछ चीज़ें पॉलिटिकल से ऊपर जाकर होती हैं, और वो जिस जगह पर ये 22 ख्वाजा बसे हैं वो जगह उजड़ नहीं सकती। सो दीज आर these are oral traditions, these are absolutely things that you will not find on internet, and you may not find them on Wikipedia. Hence a conversation like this and your questions and his talking about it is so very important, because we are going to lose all of this in some time because we are just stuck on our gadgets. So please come on, you wanted to ask something, go ahead. So I didn't kind of got answered. It was about the way the film ended. आपने जब उसको एंड किया with the use of the word zikr, so उस पे वो बात हमें बहुत छू गई,
And then in the course of your conversation, He spoke that. yes, you spoke. So, but if I may, continue this and, push you all to think of, something in asking. That when Muzaffar Saab, when you visualize a film like, Umrah Jaan, you know, even in a very cinematographically strong commercial film, if we may call it, there are still those elements of pathos, of spirituality, so beautifully woven into it that you don't come back thinking you watched a commercial film that was so successful. You come back thinking, oh my God, what a film, what a character. How are you able to balance that? Because it's very difficult to balance the commercial and the spiritual aspect of it. एक कमर्शियल क्या है, एक चीज को कई लोगों ने देख लिया और देखते गए और देखते रहे तो कमर्शियल हो गई. एक चीज है जो राज रही तो राज रही. बहुत सी चीजें हमने जो की जो अभी तक छुपी नहीं है, राज है. इसका मतलब ये नहीं कि वो कमर्शियल नहीं हो सकती, लेकिन कोई भी काम आदमी करे, जैसे उमराव जान भी एक रूह की कहानी है, वो रूह के बाहर की कहानी है, नहीं रूह के अंदर की कहानी है. रूह का सफर है एक लड़की का, और उसी रूह के सफर को कैसे आप पेश करते हैं, उसके अंदर अपनी एक तहजीब है और अपनी एक रूहानियत है और आपकी अपनी क्या कहते हैं समझ और सलीका है. तो अब जब हमने उमराव जान की कहानी पढ़ी, सुनी और सुनते रहे, तो हमें उसमें मतलब परत दर परत बहुत सी चीज़ें नज़र आई. मतलब वही जहाँ तक देख सकता है नज़र जिसकी जहाँ तक है. तो जहाँ तक हमारी नज़र गई हमने उसको देखा. अब उसको देख के फिर उसमें ये भी एहसास हुआ कि ये कहानी जो है वो एक शायरा की भी हो सकती है, और शायरा है तो उसका एक अपना सफ़र है, उसका अपना एक जद्दोजहद है, उसकी एक अपनी दुनिया है जो बनानी है अपने दिल में, और फिर वो दुनिया कैसे आगे दुनिया से मुकाबला करती है, और फिर वो दुनिया कैसे दुनिया के आगे टकरा के चकनाचूर हो जाती है, फिर कैसे खुद का सामना करती है. तो ये पूरी एक शायरी का ट्रिजेक्टरी होती है. तो इस ट्रिजेक्टरी को पेश करना एक रूहानी सफ़र था हमारे लिए भी और रेखा के लिए भी, और इसी और साथ साथ एक रक्कासा की कहानी जो रक्स करती है. अब रक्स समझ सकती हैं, रक्स जो है वो सिर्फ डिसिप्लिन ऑफ जस्ट बीटिंग योर फीट ऑन द टॉप ऑफ द तबला एंड द घुंघरू इज नॉट इट. जब तक के दिल के अंदर से नहीं की चोट से वो नहीं सिंक करती है मतलब मूवमेंट, तो उसका कोई असर नहीं होता है. तो जब ये रक्कासा की कहानी है तो उसमें हमने पूरे में घुंघरू नहीं इस्तेमाल किए. हमने कहा अगर हम घुंघरू इस्तेमाल करेंगे तो हमें लगेगा कि हम किसी बाहर की चीज़ से उसको हम एसोसिएट कर रहे हैं. तो उसकी दिल की धड़कन से हमने उसको पूरा रक्स को किया. और हमारे साथ जिन्होंने काम किया, कुमुदनी लाखिया, she's a wonderful dancer and there's something very deep about her. If she's not there in many of the people I knew at that time. बहर तो उमराव जान जो थी वो एक कहानी थी लखनऊ की तहजीब की, लखनऊ की तहजीब के टूटने की कहानी थी. तो उसमें वो तमाम सब दर्द मिलते हैं जो आज की ज़िंदगी में होते हैं, तमाम सब उतार चढ़ाव ज़ेरो गम उसमें आपको मिलेंगे ज़िंदगी के. तो अब उसको अपनी ज़िंदगी से, अपने तजुर्बों से, अपनी सुबह शामों से जोड़ना और उसमें ख्वाब देखना और ख्वाब दिखाना, वो एक पूरा एक व्यू है, एक डूब जाने वाला मामला होता है. अगर आप उसमें डूबे नहीं तो आप किसको डुबोएंगे अपने साथ. अब डूबने के लिए
सबको डुबोना पड़ता है, जब तक सब न डूबे तब तक पता नहीं चलता. Anyone wants to? Yeah. आपके इस डॉक्यूमेंट्री में एक कवाली का आपने इस्तेमाल किया उस ज़ियादे मिस्कीन का, तो इससे ज़ियादे मिस्कीन का जो कॉम्पोजिशन पढ़ता हूँ उसमें भटक साहब सिवाय फारसी का भी काफ़ी पैरेलली वन स्टैंजा इन फारसी एंड वन इन probably local dialect. फारसी आज की तारीख में कॉम्पोजिशन में गायब होता जा रहा है. Why do you think that the language itself is getting impoverished because of the disappearance of Farsi or Hindi or? I think यहाँ तो ये भी है, बहुत कम चीजें बच रही हैं ना. क्या है, आपको जो आता है उसको ही आप बचा ले तो बहुत है. फारसी तो बहुत दूर की चीज. अब देखिए फारसी जो एक इल्म की जबान थी और बड़े जितने भी आलिम थे वो सब फारसी जानते थे, सीखते. आपको जितने भी आपको ब्राह्मण मिलेंगे सब फारसी नाम होंगे, कश्मीर में खास तौर से जितने भी कायस्थ मिलेंगे आपको अवध वगैरह में सब फारसी नाम होंगे. अब उनके बच्चों ने ना पढ़ी. कहावत है कि कोई कायस्थ साहब जो थे वो he was on his deathbed, तो वो बार बार कहे तो पता चला कि मर गए वो बेचारे. आप कहते थे तो जो उनका लड़का था कहने बप्पा आप कहाँ था, गुजर गए, हम पानी खटिया नीचे धरा था. तो ये है मामला कि आपके की प्यास बुझाने का जो साधन है वो आपके साथ चल रहा है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो. अब मैंने भी मतलब बहुत कोशिश करके, मुझे आती नहीं लेकिन मैं लगा रहता हूँ फारसी पढ़ने में, और उर्दू भी मैंने धीरे धीरे करके खुद सीखी. बिल्कुल समझने में अंग्रेजी का दौर था, लोग कहते थे एक दिमाग है, उसको दिमाग में या तो अंग्रेजी जाएगी या उर्दू जाएगी, तो अंग्रेजी गई. फिर धीरे धीरे उर्दू के लिए मैंने अपना दिमाग खोला. अब मैं फारसी के लिए खोल रहा हूँ, और फारसी से मुझे इतना उसमें एक लुत्फ है, जिसमें आपने देखा तो एक तो कश्मीरी भी वही चीज़ गा रहा है, अवध का भी वही चीज़ गा रहा है दयाली मिस्की, और यहाँ का भी क्या नाम है ईरान का भी गा रहा है. तो एक इट्स अ इंटरेस्टिंग मेटाफर दैट इज फाइंडिंग kind of that is relevant in so many geographical spaces, you know. तो क्योंकि वो बात जो है, जो उसके मायने हैं, जो उसका ईथॉस है, वो कहीं कर जाता है. तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपके दिल में ऐसे मकाम हो, ऐसे घर बने जो आपको एक पोइटिक स्टेप्स लेने के लिए मजबूर करें. उसके लिए थोड़ी सी कोशिश करना पड़ती है. जहाँ आपने कोशिश की तो एक चीज़ आपका साथ देती है. वो क्या है? वो आपकी मस्ती है. जहाँ आपने कोशिश की, एक मस्ती ने आके आपका हाथ पकड़ लिया, और फिर यू डोंट लुक बैक. लेकिन कोशिश करना ज़रूरी है. अब हम लोग जो जहान खुसरो करते हैं वो एक कोशिश है, और उस कोशिश से एक मस्ती का आलम पैदा होता है. तो जो जितनी भी म्यूजिक तैयार हुई है, पता नहीं कितने घंटों की और कितनी आला म्यूजिक है, मैं बयान नहीं कर सकता अपने मुँह से, हालांकि गाया दूसरों ने है, क्योंकि वो तैयार हुई है दुआ से. जो गाता था या जो करता था, उसके लिए हम लोग दुआ करते थे कि अल्लाह इनकी हाजिरी जो है कबूल कर ले. इट वाज नॉट लाइक अ कॉन्सर्ट, इट वाज लाइक अ प्रेयर, इट वाज एन इन्वोकेशन टू make that what the person is going to sing enter into people's heart. तो उस तरह का कलाम छांटना, ढूंढना और लोगों को नजर करना, क्योंकि किसके कौन है उस कलाम के काबिल, ये भी कुदरत से ही आता है. तो that whole process of 20 years of acquiring that
poetry and giving that poetry and sitting with most artists and arriving at a melody. See, arriving at a melody is also a blessing. You know? Because I've worked with the most amazing music directors and I know what music is, you know what I mean? And I've had conflicts with them and I think, and I've also had taken flights like people like Chedeji, people like Khayyam, Ustad Ghulam Mustafa Khan, these are all my music directors. You know? I've worked with them, so I've taken flight with them and I've also had conflicts with them. So now I know that music is an immense ocean and it is with the musician. It is in the voice and I have to somehow take it out in a way that it will do justice to the words, to the kalam. तो वो है जहान खुसरो का एक सिलसिला पिछले 20 साल का और कहाँ से लोग आए हैं उसमें कहाँ वो जाएगा कहाँ तक जा सकता है that I don't know but जहाँ तक वो आया है that itself is I think a miracle. Since we are sitting at a photography exhibition, there is another thing that actually comes to my mind when we see creative work is when you shoot a film, do you see it as a frame first or you see it as part of your story first? Or it calls out to you that shoot me? See, still is a still. Now, in your moving images, Moving when you because see a frame, you have to see it as a movement. You know? Because if you don't, एक जैसे एक sentence है, कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से जाके कहाँ खत्म हुआ है. That's a shot. You know? It has its spatial journey. It has a play of light and shade. You know, and you need to understand what that light and shade is and what it do you can do. dream of it or it just comes in front I of you? sketch it out. I don't take chances and I have learned to sketch a shot. I don't just do a frame. I take the frame from beginning to end in the space with the way the light is going to play its drama. You know what I mean? And I've been doing, I mean, I'm not a technical photographer, लेकिन मेरे पास इतनी फोटोग्राफी है जितने जहाँ शूट किया है उसके लोकेशंस पर जिसको मैंने कास्ट किया है उनकी शक्लों की फिर उसके बाद स्टिल लाइफ्स की इस तरीके का I mean I don't show these things but they're there and उस दिन नीमराना में तिजारा में I met Zeenat Aman and I said you remember I took your pictures she had forgotten you know I think she didn't forget but it was a long time back तो मैंने उसको दिखाया those pictures were like a dream you know because I was planning to take her film so I wanted to be a dynamic figure इस तरीके से I think photography and sketching are the first step to create a film. No, that's very important, which I wanted actually, I knew that, but I wanted him to share it with you, is that, you know, everything about his, I worked with him in a serial, and each frame was drawn, sketched. How many of the filmmakers or creative people today would actually go there, most that I have otherwise worked with, go on the spot, see it, and, you know, kind of do it, what is available there. But that kind of detailing, which actually, if I may say, I saw an exhibition on Satyajit Ray and I was, you know, zapped at seeing those sketches. And then I realized that these were what I had seen with Muzaffar. That he would sketch out a shot, which is actually, you know, something that most of us, even creative people, can't think of doing it today. You know, painstakingly creating it on paper and then recreating it on the medium that you choose. Actually, Ray was a trigger for me. Some way. Really? Because I used to work with him in Calcutta. So I just, I mean, he was very close to me. I was very fond of him. हालांकि वो तो giant थे. But what I felt was that what he was doing for Bengal, I thought अवध को किसी ने कुछ नहीं कर सका है. So what you saw here was really
in a way a genesis of Awadh. It couldn't have come out of somebody who's not from Awadh. क्योंकि अवध एक चीज़ ऐसी है जो समझाई नहीं जा सकती. वहाँ का जो एक गंगा जमनी कल्चर है और शी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अवध, यू नो. तो उसको एक और जो आपका सवाल था जो इस देश को खतरा है, वो खतरा भी अवध ही से दूर हो सकता है. तो I don't know how many people are from Lucknow here, but I think we all are standing very proud. Just what I'm saying that it's really the taking the ethos and the culture of Awadh into different shades and forms is something maybe if I had not touched upon it, I may not have taken that route. But the route I took is also very different. It's and there's a lot of things that I'm still dreaming of doing with Awadh, which now I see very difficult to happen. That is a true tragedy. That there are a lot of cinematic ideas on Awadh which I have, which are not being able to see the light of day. That is one big frustration in my life. So why are you not able to? But why are you not able to? work on? I think because the whole way of looking at the medium, the way of looking at finance, it's a very expensive thing. Filmmaking is very, very, very expensive. You know? तो सीधा आपको मतलब हर चीज़ में estimates और bill और सब आके एकदम आपको छाप लेते हैं आप. You forget your planning and dreaming and all that. So I think, but what I'm saying is that I have a right to say that I'm frustrated in that area. पैसे वाला कोई की हिम्मत नहीं ना किसी को. वो सोचता है यार मैं पैसे लगा लूँ, इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वाले पता नहीं कहाँ हैं, किस दुनिया में हैं. And I don't think I would. तो मैं पेंटिंग कर सकता हूँ. पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अपने हाथ में है. हुसैन साहब ने मुझसे कहा कहाँ फिल्मों के चक्कर पड़े, हमारी तरह पेंटिंग क्या कीजिए, आप इतनी अच्छी पेंटिंग करते हैं. तो मैंने हुसैन साहब आप जल्दी कीजिए, मतलब हमारी घर में बहुत टाइम लगता है पेंटिंग करने में. कह रहे मेरी तरह कीजिए जल्दी जल्दी वाली पेंटिंग. तो मैंने जी कहने फिर एक शेर सुना है कि नहाने की खुशी न जाने का गम, कमाए दुनिया खाए हम. तो वो शेर तो मैं अपने आप को सुना देता हूँ. लेकिन anyway, I'm happy with painting. तो जो चीजें आपने ऑलरेडी बना ली वो भी अभी तक आधे से ज़्यादा बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी. So what about that? अब उसके लिए तो नीरा इज देयर, मंजरी इज देयर. ये दिखाई ना. हालांकि आई एम वेरी अपॉलोजेटिक, उसकी बड़ी हालत खराब है, बट यू कैन सी इट ऑन यूट्यूब. बहुत It is now on All YouTube. of them? हाँ, it's Most of them, Peter, yeah. Several of them. एक तो यू गेट मुजफ्फर अली हाउस ऑफ कोटवारा में. I've just done about 18 films on textiles and craft. Yes, those are very interesting So films. they're very dreamlike films, because I think craft एक ऐसी चीज है, ये सब craft है. और ये सब जितने भी दरगाही लोग हैं, ये craft की ही बरकत की दुआ देते हैं. जब तक देखिए गरीब आदमी के हाथ में कोई रोजगार नहीं है, हुनर नहीं है, तो उसको क्या फायदा. तो जितने भी फकीर हैं वो किसी ने मेकिंग दिस फिल्म कच्छ एम्ब्रॉयडरी, तो किसी ने मुझे किस्सा बताया कि यहाँ पर एक कोई मुसाफिर जा रहा था, तो उसको ही वांटेड वाटर, तो किसी ने पानी पिला दिया. तो ही taught him how to embroider on leather. तो वो आज तक चला है. Same thing in Kashmir, वो Ali Hamdani brought craftsmen and artisans. तो उन्होंने पेपर मैशी और कालीन बाफी और क्या नाम है
شال کا, تو یہ پشمینہ, یہ پورا یہ ایک فقیر کی دعا جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. اور ایک کریٹو فقیر جو ہے وہ ہمیشہ ہنر دیتا ہے. ایسا فیل کہ یہ فلمیں جو ہم نے بنائی ہیں وہ ایک طریقے کی دعائیں ہیں. آپ جب بدری کی فلم دیکھیں گی تو آپ کو لگے گا یہ ہم کر سکتے ہیں. جب آپ موگا سلک کی فلم دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا ارے یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آدمی امپاور ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہم کر سکتے ہیں. ہم بہت سی چیزوں میں بحث ہو جاتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ اس کے اوپر ایک فلم بنائیے تو ہر آدمی کو لگے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اگر آپ لوگوں میں ایک احساس دلا دیں کہ یہ تو ہم کر سکتے ہیں. اب یہ بہت مجھے لگتا ہے یہ ایک طریقے سے جہاں بھی جا کے یہ بیچ پڑ جائے کہ ہم کر سکتے ہیں والا. کرافٹ کا یہی کام ہے. کرافٹ کا یہی کام ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. اب وہ ہم لوگوں نے چکن شروع کیا, اب وہ چکن کا پورا کوریڈور بن گیا, پٹوارے سے لے کے وہاں تک لکھنؤ تک. لکھنؤ کی بھی اس طرف ہر طرف وہ جو ہے, کیونکہ لوگوں کو لگا یہ تو ہم کر سکتے ہیں. اور واقعی چکن ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں مطلب اتنا حسن ہے, اور کہاں سے وہ حسن آیا, کس کا خواب تھا وہ, کس فقیر کا خواب تھا, اور یا کس مطلب کہ وہ ایک چکن کا مطلب اسموتھ, تو وہ ہر چیز اگر آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں پھول پتیوں سے, جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ چیزوں کو کیسے لوگوں نے ٹانکے کی شکل دی, ٹانکے سے کچھ اور نکلا, کچھ اور کسی چیز سے کچھ اور نکلا. تو آئی تھنک یور مائنڈ ہیز ٹو بی ویری ایکسپلوریٹو, اور یو کیناٹ اسٹاپ, کیونکہ ہر جگہ سرسری ہم جہان سے گزرے, ورنہ ہر جہان دیگر تھا. ہم لوگ جلدی سے دنیا سے گزر گئے ہر جہان سے, ورنہ ہر مقام پہ ایک اپنی دنیا تھی. آپ کو رک کے اس دنیا کو دیکھنا پڑے گا, اسی لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے. اگر آپ نے رک کے اس دنیا کو نہیں دیکھا تو آپ پھر چرخا ہے. آپ رک کے دیکھیے نا, ہم تو بیٹھ جاتے ہیں, ہم رک کے دیکھا کرتے ہیں. ایک بار ہم I still have that old Jaguar, تو میں گیا تھا اوپرا ہاؤس ایک پارٹ لینے, ہمیں بورنگ, تو اب وہ میرا مستری جو تھا البرٹ, اس نے کہا آپ بیٹھو یہاں گاڑی میں, وہیں ڈھونڈ کے لاتا ہے پڑا. تو وہ غائب ہو گیا. وہاں پر ایک چمڑے کی دکان تھی اور ایک آدمی بیٹھا ہوا وہ ٹاکا لگا رہا تھا. اب میں 1-2 گھنٹے تک میں نے اس کو دیکھا, پھر مجھ سے رہا نہیں گیا, میں اس گاڑی سے نکل کے میں اس کے بھاکڑے پہ بیٹھ گیا. دیکھتا رہا. پھر میں نے اس سے کہا تم میرے ساتھ کام کرو گے؟ تو اس نے مجھے دیکھا اوپر سے, یہ ابھی تک دیکھا نہیں تھا. بہت سے لوگ آتے جاتے تھے, تو کہاں رہتے ہو؟ تو میں نے اپنا پتہ لکھ کے دے دیا. لیونگ ان پالم اسپرنگ, ورکنگ ان ایئر انڈیا. ایک بیڈ روم کا فلیٹ تھا. اس کے بعد ایک دن گھنٹی بجی اور دیکھا کھڑے ہوئے باہر. میں نے کہا کیا ہوا بھائی, کون؟ کہنے آپ نے بولا میرے ساتھ کام کرو گے. تو میں نے تو وہ آکڑا تو بیچ دیا اپنا, اب کیا کروں. میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے. Then he stayed with me for 20 years. He died in my house, you know what I mean? And ہم نے جو بیگز بنائے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے, وہ each bag was something to you know to see. We ended with a lady in Bombay with some taste in that bag. I used to go to, جب انڈیا میں ہم جاتے تھے نیو یارک کا, I used to get these punching machines and this and that, اس کو لا کے دیتے تھے. And he was the most wonderful man, بھرت اس کا نام تھا. تو مقصد یہ کہ جب تک آپ غور سے نہیں دیکھیں گے اور ایک ایسے آدمی کو نہیں دیکھیں گے جس کے ہاتھ میں ہنر دیا ہے قدرت نے, جس کے ہاتھ میں آپ کو کچھ نہ ملے گا نہ آپ کچھ کسی کو دے پائیں گے.
Yes, it would be endless actually if we keep talking with Muzaffar Saab. And I would say that I've experienced it, and we spend hours, and there's so much more to learn. And for me personally, Muzaffar Saab coming here today, as we end this exhibition tomorrow at the museum. My journey of Qawwali, while Muzaffar says he lived in Lucknow and he doesn't remember, I distinctly remember my first Qawwali that I heard was with Muzaffar Saab, was at Deva Sharif. He had taken me there, and I was zapped with the music that I'd heard. And वो आपके पीर साहब थे जिनके साथ गए थे. अच्छा वो मजगावा शरीफ. So that is somewhere Arif that Arif, and that is somewhere where the journey started. And it, like what he says, it's something that rolls on and on and on. And today, 28 years or 29 years down the line, it brought somewhere where something like a Qawwali photo project came up, a Qawwali project came up, which is where to share with people that look here, these are our traditions that we need to cherish and keep. So somewhere this journey started because of him, and to have him here as part of this is somewhere like a full circle personally for me. And the fact that a single person as Muzaffar Saab, the kind of work that he's done in keeping Qawwali alive, whether it's through his films, whether it's through his shows, even through his fashion shows. Nobody else had ever thought of using Qawwali for fashion shows. Muzaffar Saab did it 25 years back. So somewhere he brought this into the format where we all started loving that music form. So his, there are so many aspects to the world of art and creativity that, he has given his life for and done it. Qawwali is one of those. It's been an integral part of all Jahani Khusro festivals. Many of you have attended, and he's done innumerable mehfils for it. So thank you so much, Muzaffar Saab, that you came here today to be part of this Qawwali photo project. And trust me, these are innumerable, priceless. We can't put a price tag ever to it, to what he says, because it's, like I said, the first word, it's the sensitivity with which he lives, with which he associates himself to each person who has ever worked with him, lived with him, even briefly associated with him. Nobody goes back untouched, as I would say today, each one of you. I'm sure you will all have one small, one big takeaway from what he has said today. And that's what makes him a priceless genius, that I always say, that we need you in today's time to speak more often of love, of ishq, of mohabbat that you do. Thank you so much.